2024નું એલડી કોલેજ ઓફ એન્જિનિયરિંગ ખાતે આયોજન કરવામાં આવ્યું. એલડી કોલેજ ઓફ એન્જિનિયરિંગ ત્રિવેણી એલડીસીઈ સાથે એલડી કોલેજ ઓફ એન્જિનિયરિંગ અમદાવાદમાં ત્રિવેણી 2024 આયોજન 3 દિવસીય વાર્ષિક ઉત્સવ છે. ઇવેન્ટ્સની વિવિધતા, જેમાં વિવિધ વર્કશોપ, ટેકનિકલ ઇવેન્ટ્સ, નોન ટેકનિકલ ઇવેન્ટ્સ, સિમ્પોસિયમ ઇવેન્ટ્સ અને સાંસ્કૃતિક ઇવેન્ટ્સ શામેલ છે. મુખ્ય કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવશે, જ્યાં આપણે માનવીઓ વચ્ચેના તાલમેલના વિવિધ માનસિકતાના કરારને ઉજાગર કરીને ક્ષિતિજની બહાર કલ્પના કરવાના વિચાર સાથે યુવા વિચારસરણી અને નવી ઉભરતી તકનીકોના યુગમાં નવીનતાઓને પ્રેરિત કરવા માંગીએ છીએ. યુવાનો એવા તબક્કામાં છે જ્યાં દરેક કાર્યક્ષેત્રની પ્રશંસા અને સન્માન કરવામાં આવે છે, વધુમાં વધુ વિદ્યાર્થીઓ સુધી પહોંચવા સક્ષમ છે. ત્રિવેણી તમામ કાર્યક્ષેત્ર, ટેકનિકલ, નોન ટેકનિકલ, વર્કશોપ, સિમ્પોઝિયમ અને સાંસ્કૃતિક એવા દરેક વિભાગમાં વિદ્યાર્થીની કુશળતા અને નવીનતા પ્રદર્શિત કરવા માટે પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડે છે. આ થીમ દ્વારા આપણા દેશની સાંસ્કૃતિક વિવિધતા સાથે નવીનતા, વિચારધારા, વિચાર એકીકરણને પ્રકાશિત કરી શકીએ છીએ. Actually, ma'am, till last year, what AV had different kinds of fests, like technical fest or cultural fest. So what we had an idea was we wanted to combine everything together. Like a sports person would never interact as like a technical person would. A person who's good in his technical skills, a person who's good in sports, a person who's good at non-tech or cultural. So they all can come together and interact with each other. So we tend to bring such a culture that it promotes innovation. Innovation is everywhere. It is just the right thing to recognize. We just need to see where we can improvise and what better we can do. So our goal and our motto was such that we bring everything together, such that different kinds of people from different domains, different cultures, different colleges come together, interact with each other, and like this would also promote many startups and many different ideologies, because like person who is good at technical skills, he might be wanting a graphic designer, he might be wanting a social media influencer to promote his business. So this would give them a platform where they can bring out people to join their team and do good for the society. As you said, as long as the competition times are not clashing, he can Actually, participate. I want to draw your attention to that. Last year also you did very well. Attempt is very good, fantastic. The problem is, if you are clubbing all together, so a person who is participating in one event literally has to write there only to know that it is not possible at this time. This time we have taken Last care time of. there was little No, chaos. we try to take care of those things as much as possible. Though the 100% like omission is obviously not possible, because the choice varies from person to person. Like I might want to get myself involved with some of the symposium, but at the same time she might want to get involved with the technical event that is happening. So we try to exclude the timings, but then unfortunately, like within these and we cannot expect students to stay for more number of days, because students, we all understand that they have a very like limited resources available, and even at our end, like we cannot accommodate students for a week-long program or a week-long festival kind. So like within the How logistic many total limitation, events? 40 plus. 40 plus. And what are they? The event breakdown is such that we have technical events first. In technical, we have civil IC events, we have EC electronic events, we have computer events, we have environment events. Like it includes all the different departments of engineering, like 14 departments of engineering we have in our college. It includes all of them. Then in the non-tech, we again have distribution, symposium which we have. It has entrepreneurial events, then fun events that we have, then non-tech events such as shoe painting and MUN that is there, and then cultural event like the culture night we have and the Rangmanch which is there for the students to participate. પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં આવેલા સૌનું સ્વાગત છે. I presume કે બેસિક જે મટીરિયલ આપણી પાસે છે આપણા આઈટી કોલેજ ઓફ એન્જિનિયરિંગના વિદ્યાર્થીઓ કે
ત્રિવેણીનું આયોજન સૌ પહેલી વાર કરી રહ્યા છે. ટેકનિકલ, નોન ટેકનિકલ અને કલ્ચરલ ઇવેન્ટ્સ 40થી વધારે ઇવેન્ટ્સનું આયોજન આ સ્ટુડન્ટની કમિટી દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. 3 વિદ્યાર્થીઓ આપણા એના કોઓર્ડિનેટર છે, સત્યમ સિન્હા, પુષ્પી પુરોહિત અને નાગેશ પાલ. ટેકનિકલ ઇવેન્ટ્સની વાત કરીએ તો ટેકનિકલ સિમ્પોઝિયમ વિદ્વાન શેખ સ્પીકર છે એનું છે. નોન ટેકનિકલ સિમ્પોઝિયમમાં મોહિત જાગવાની છે, પબ્લિક સ્પીકિંગ પર બોલવાના છે. તરુણ યાદવ છે, ડિસિપ્લિન ઇન લાઈફ સ્પોર્ટ્સ પર્સન છે, એના વિશે છે. મૃણાલ શાહ છે કે ડાયનામિક્સ ઓફ લીડરશિપ, એટલે કે ટેકનિકલ અને નોન ટેકનિકલ દરેક પ્રકારના સિમ્પોઝિયમનું આયોજન કરે છે. બહુ બધી ટેકનિકલ ઇવેન્ટ્સ અને કોમ્પિટિશન્સ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા રાખવામાં આવી છે. કલ્ચરલ ઇવેન્ટમાં આનંદની વાત એ છે કે આપણા એલડી કોલેજના જ એલ્યુમની ગરમ સોડા અને એનું બેન્ડ એ પ્લે કરવાનું છે. આ આખી ઇવેન્ટ 21, 22 અને 23 દરમિયાન લગભગ 15,000 જેટલા વિદ્યાર્થીઓનો ફૂટબોલ રહેવાનો એપ્રોક્સિમેશન છે અને 6,000થી વધારે વિદ્યાર્થીઓ છે they will participate in different activities. આ બધી એક્ટિવિટીની ડિટેલ્સ આપની પાસે છે જ. मेरा नाम नागेश अभिलाष परमार है एंड बेसिकली मैं एलडी का 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ सिविल से. और त्रिवेणी के अंदर हम 3 लोग हैं, मैं उसमें से एक हूँ जो इस चीज़ को शुरू करने के आरंभ में मतलब जिन्होंने स्टार्ट करने की कोशिश की थी. ठीक है, तो त्रिवेणी बेसिकली 3 दिन का एक एनुअल फेस्ट है कॉलेज के लिए, एलडी कॉलेज के लिए. और ये पहली बार एलडी कॉलेज में हो रहा है और इसका बेसिकली मकसद यही है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अपने आप को अपनी स्किल्स को एनहांस करना चाहते हैं या अपना एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं कुछ ना कुछ करने का कोई ना कोई फील्ड में, एक मेन पर्पस है. दूसरा पर्पस ये है कि हम चाहते हैं, मतलब हमने जब शुरू किया था तो ये सोच के किया था कि हम कॉलेज का नाम ऊपर कर सके इससे, कोई एक ऐसी चीज़ जिससे कॉलेज को जाना जाए, मतलब हर जगह से उसको पहचाना जाए. नाम लेते ही अच्छा ये एलडी कॉलेज का है. ठीक है, कमिंग टुवर्ड्स द इवेंट्स 3 दिन का इवेंट है. इसके अंदर अलग अलग टाइप के डोमेन्स हैं, अलग अलग उसके अंदर अलग अलग इवेंट्स हैं. बहुत सारी डोमेन्स की बात करूँ तो टेक्निकल डोमेन है, नॉन टेक डोमेन है, कल्चरल डोमेन है, कुछ वर्कशॉप्स हैं और एक नया हमने ऐड ऑन किया है जो आज तक कभी कॉलेज में हुआ नहीं है, उसको हम सिम्पोजियम कहते हैं. सिम्पोजियम बेसिकली एक ऐसा इवेंट है जिसके अंदर अलग अलग स्पीकर्स जो अपने अपने डोमेन में मशहूर हैं या फिर एक्सपर्ट्स हैं वो आकर बच्चों के साथ बातचीत करेंगे, उनको कुछ ना कुछ बताएंगे. वैसे हमने ट्राई किया अलग अलग स्पीकर्स के, एक स्पोर्ट्स डोमेन से हैं, एक टेक्निकल डोमेन से हैं, दूसरे जो है पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर से हैं, तीसरे जो एंटरप्रेन्योर डोमेन से हैं. ठीक है, कमिंग टुवर्ड्स द टेक्निकल डोमेन के अंदर हमने ऐसे ऐसे इवेंट्स को डालने की कोशिश की है जो मेजर इंजीनियरिंग डोमेन्स को, जो मेजर इंजीनियरिंग ब्रांचेस हैं जैसे मैकेनिकल, सिविल, ईसी, कंप्यूटर साइंस, आईटी, जितने भी ऐसे अलग अलग ब्रांचेस हैं उन सब के अंदर मतलब इन द सेंस ऑफ जितने भी तरीके से बढ़ावा मिलता है. जैसे मैंने पहले भी बताया था कि स्टार्टअप में आपको सिर्फ एक बंदे की ज़रूरत नहीं होती है जो आइडिया देता है, उसके अलावा उसको 17 चीज़ें चाहिए होती है. फाइनेंस एक बंदे को देखना पड़ता है, मार्केटिंग एक को करनी पड़ती है, ग्राफिक्स देखना पड़ता है. तो हमारे यहाँ पे जितने भी स्टार्टअप्स आएंगे जैसे ई चाय हो रहा है उसमें 40+ एंटरप्रेन्योर्स हैं. उनको पता है उन्होंने 0.0 से लेके अभी तक कैसे वो लेके आए हैं. तो वो जो वॉनबीज हैं जिनको बनना है तो उनको वो बताएंगे आपका क्या रास्ता होना चाहिए, आपका क्या पाथ होना चाहिए, जिस तरीके से आप वो अचीव कर सकते हैं. और वही सेम चीज़ जैसे ग्राफिक्स हमारे लिए हमारे फेस्ट के अंदर ग्राफिक्स की कंपटीशन है, सोशल मीडिया में POV वाली कंपटीशन है. तो यहाँ पे वो लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कौन उनके साथ उस कॉज के लिए जुड़ना चाहता है. उनको फिर अलग से टीम बैठ के ढूंढना नहीं पड़ेगा कि अच्छा मेरे को ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, मेरे को लिंक्डइन पे पोस्ट डालनी पड़ेगी. और ये यहाँ पे डायरेक्टली वो यहाँ पे आए, 15-20 लोगों से मतलब 100-200 लोगों से मिले, उनमें से उनको 10-15 अच्छे लगे, उनमें से उन्होंने 2-3 को टीम में लिया. तो हमने वो जो पूरा प्रोसीजर होता है जो आपको अलग अलग और मैं यहाँ पे मार्केटिंग एंड स्पॉन्सरशिप देख रही हूँ. जैसे इसने बताया हम 3 लोगों ने चालू किया था, सो आई एम वन ऑफ देम. और जो तीसरे इंसान है सत्यम सिन्हा, वो अभी हमारे साथ प्रेजेंट नहीं है, वो अपनी जॉब में बिजी थे इसलिए वो नहीं आ पाए. वो इवेंट्स का देख रहे हैं, बेसिकली ये कैंपेनिंग का संभालते थे. इवेंट्स में जैसे इन्होंने बता रहे थे कि मेजर डिपार्टमेंट्स अभी तक का यही कंप्लेन रहता था कि जैसे कुछ डिपार्टमेंट्स हैं वो साइडलाइट हो जाती थी. बट व्हाट वी हैव ट्राइड कि हम सारी डिपार्टमेंट्स को उतना ही इम्पोर्टेंस दें जितनी बाकी सारी डिपार्टमेंट्स को मिल रही है. सो
हर एक डिपार्टमेंट के लिए हमने एक प्लान करी इवेंट जो उनके डिपार्टमेंट में आगे उनको हेल्प करे, उनकी जो भी स्किल्स है वो वहाँ पे शोकेस कर सके। और हमारे जो जजेस हैं वो भी ऐसे हैं जो एक अच्छी कंपनी एस्टैब्लिश कर चुके हैं, तो डायरेक्टली टैलेंट एक्विजिट कर सकते हैं, डायरेक्टली टैलेंट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं हमारी इवेंट्स के थ्रू। कहीं ना कहीं ऐसा कार्यक्रम हर साल होता है, तो इनमें से स्टार्टअप को कितना बढ़ावा मिलता है?